Okay, beta, welcome back. So, were you able to get the answers? यस सर, निकाल लिए थे सर सुबह ही. Oh, sorry, I joined the wrong class. Okay, bye bye, beta. सर I joined the स्टेबिलिटी की है class. सर. Yeah, that's right. I'm leaving. Bye bye. ओके सर, फिर Thank चेक you, करने sir. लगा मैंने अगर चेंज हो गया. बाय सर, बाय सर.
बताइए कितने Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Okay. I've given you 3 questions to do at home. So, shall we compare the answers?
Yes, sir. Okay. So the first part was we were going from 1.025 and we were going to 1.004. 4. Okay. So for the first part, when you're going from 1025 to 1004, what was your forward and aft draft? 9.351 even keel, sir. 9. Final answer. 9.35. 9.35. 1. 1 तो नहीं आना चाहिए, 350 आना चाहिए, I think so. How are you getting 1? I'm Yes, sir. not 3.5 so yes. sure. 3.5 है. जी सर. तो बट सर ये हाँ जी बोलो. 1 आ गया तो मतलब ये सही होगा ना सर, ये 1 भी आएगा तो. नहीं, the point is, I hope you've not made any technical error inside while doing that. That's my only concern. That's my only area of worry. कैलकुलेशन में कहीं राउंड अप कर दिया होगा और कुछ नहीं है. That is the only thing which I'm बाकी तो just ठीक thinking, है. because otherwise 9.350 ही आना चाहिए directly, सीधा. So इस part में किसी को कोई any difficulty in the first? No, it was all okay, smooth था ये. Okay. सर ये डिस्प्लेसमेंट का समझ नहीं आया कि जब सी वाटर डिस्प्लेसमेंट हो गई, एलसीजी निकाल लिया, उसके बाद सर 1004 की डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना. ओके, ठीक है. तो वो नहीं समझ आया. हाँ जी सर, वो एक बार बता दीजिए. तो इनिशियल कंडीशन आपने इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल लिया था. So your initial hydrostatic draft came 9.183. 9.183. Agreed? यस सर. Yes sir. Okay. So 9.183 in salt water. So you got a W salt water of 19494.5 tons. यस सर. Okay. Now you moved to 1004. When you move to 1004, what will be your displacement in 1004? सर डिस्प्लेसमेंट हमारी यही रहेगी सर एग्जैक्टली. बिल्कुल This is the final displacement. Absolutely right. So final condition 1004, my displacement will remain the same, 19494.5. Is this okay? यस सर. Now displacement in dock water, question number 4. Yes sir. Okay, question number 4, displacement in dock water. I don't have tables for 1004. I have tables for 1025. So how do I go? I find out the Equivalent कर लेंगे. equivalent saltwater displacement. What is the equivalent saltwater displacement? So 1004 equivalent saltwater displacement. So 19494.5
This divided by, अब बताओ क्या करूं? 1004 multiplied by 1025, which is, how much is it? 19902.25. This is my equivalent displacement in salt water. Corresponding to this equivalent displacement in salt water, find out the draft. That will be 9.35 meters. So W salt water equivalent, what do I get? Dock water drafts. This is my hydrostatic draft. Now LCB, LCF. now I compare the LCB and the LCG. When I compare the LCB and the LCG, I will find that LCG यहीं से उठ के यहाँ पे आएगा, ये वाला सेम. फिर LCB लूंगा, वो दोनों सेम होंगे. इसका मतलब है ट्रिम 0 है. इसका मतलब है फॉरवर्ड और आफ्ट ड्राफ्ट. ये सर जो डिस्प्लेसमेंट सर आपने लिखा है 194.94.5 इनिशियल इन सॉल्ट वाटर, इनिशियल इन सॉल्ट वाटर. सर ये मेरा आया था सर 194, जस्ट होल्ड ऑन, 19495.69 आया था सर. say that again. Yes, sir. Yes, sir. मेरा भी ये है. 19495.69. 69 कितना ही आ रहा 95 है? वहाँ पे 69 आया था सर. 6.69. और 94 की जगह 95 है सर. 94 की जगह 95 है. डेसिमल 69. Yes, sir. Okay, ठीक है, that's okay. Whatever difference you got, that's fine. No issues. ओके सर. There's no issues. But basically, conceptually, you should be clear in your mind कि कैसे proceed करना है. यस यस. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में किसी और को कोई तकलीफ? Anybody has got any doubts? Sir, with this displacement it came 9.351 और LCB and LCG सेम नहीं आ रहा था फिर से. अच्छा, अदर सर सेम आ रहा है सेम आ रहा है सर सेम आ रहा है सर. सेम आ रहा है सर एकदम सेम आ रहा है. हाँ सेम आ रहा है एकदम, उसमें कोई इशू नहीं है. जरा देख लो कहीं कोई छोटा मोटा वो हो गया इनिशियल होगा. एलसीजी और फाइनल एलसीबी से कंपेयर करेंगे ना सर. That's right. Initial LCG which will become the same as the final LCG. फाइनल एलसीजी और जो चेंज ऑफ And सॉल्ट वाटर का डिस्प्लेसमेंट है उससे एलसीबी निकालेंगे, उससे कंपेयर करेंगे. इससे जो LCB निकालोगे वो LCB 1 बनेगा. यस वो LCB 1 और LCG 1 को कंपेयर करोगे. यस सर वो थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी सेम आ रहा है. ठीक है, perfectly fine. कंपेयर तो मतलब सर फॉर्मूला में देख डालेंगे लेना तो कोई जीरो छोटा हो मोटा जाएगा ना. कोई बड़ी चीज नहीं. हाँ, so long as you method आपको समझ आ गया है, if you understood the method of how to do it, I'm okay with it. So I still have a doubt, like in the initial Yeah, please condition, go ahead. in the initial condition, we do have a trim, We trim do by have a stern. trim. Yeah. The trim by So stern. yeah, okay. So that if we put it in the trimming formula, obviously we'll find out the LCG and the LCB, we'll get it. So, but when we are comparing that to the LCB and the LCG in the second condition, how are we determining that it is at an even key? That I'm not understanding. Okay, sure. So from the trim formula, you would have got a LCG over here, and the value of that LCG would have been equal to, can you tell me the values please? 72.174. 172.175. Is this okay with everyone? Yes, sir. यस सर. Okay. Now when I move here, so my LCG1 is going to be the same. Agreed? Yes, sir. Now
corresponding to this displacement, 19902.25, I go into the tables. Okay. Yes, sir. And I read LCB1, Which is same. which will come as the same as 72.175. Okay, sir. Now I put it in the trim formula. Put it in the trim formula. सर फार्मूला में रखना जरूरी है क्या सर? No, I'm just trying to explain it to him, that's all. I'm just trying to explain it to him, the concept of it. So if I put it in the formula, so the two values are equal. This minus this is 0. Okay. Yes. That means trim is 0. Yes. Correct. Since trim is 0, it means she's on even keel. Even. Yes. Means the forward and aft draft will be the same. Yes. So that is. Is that okay with everyone? Oh, yes, sir. Any doubts in this one? The first part. Anybody? Okay. Moving on to the second part now. Second part was she was moving to what density? Sir, 006. 1.006. 1.006. Okay. तो सबसे पहले तो let's write down the drafts. So can you tell me the drafts? 9.332, 9.336. Is this okay with everyone? The drafts? Yes, sir. Sir, how we get these drafts, sir? Yeah, I'll just come to that. But I'm just comparing the answers first. Then I'll go into the stepwise mode now. Okay. सर सेम है, सर एक डाउट था थोड़ा सा. Okay. Let me just do. So this is my initial condition. No change here. No change here. Is that okay? हाँ सर. Okay. Yes. I am moving to final condition. I'm going to 1006. So when I go to final condition, 1006. When I go there, what will be my displacement in 1006? सेम रहेगा, बस इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे उसका सर. That's right. So find out the equivalent displacement in salt water. That will be 19495.69 divided by 1006 multiplied by 1025. Please remember, when you're finding out the equivalent displacement, denominator is where you are going. Denominator is where you are going. Please remember that. Multiplied by 1025. ये कितना आता है? 19863.899. Yes, the same. Okay. Now, with corresponding to this equivalent displacement, I find out the hydrostatic draft. $9.334. 9.334.
334. Okay. Corresponding to this displacement, I find out the LCB1. 72.180. Corresponding to this displacement, I find out MCTC1. That will initially be for salt water. Yes, sir. 216.447. I now convert this to 1006. 212.435. By dividing by 1025 multiplied by 1006. 21. 212.435. And find out the LCF1. 69.525. And my final LCG1, of course, will be the same as the initial. So no change in that. So now using this data, I go into my trim 1 formula. That is W1 into LCB1 minus LCG1 over MCTC1 into 100. Now I put the values and I get my trim 1. Trim 1 कितना आता है? 0.0046. 0.004545946 ले लो सर. 0046. इसमें W1 का वैल्यू क्या लिया? सर जो इक्विवेलेंट करके उससे पहले था सर, जो टॉप सेम क्वार्टर वाला जो सबसे पहले आया था. जो एक्चुअल Same डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल Yes, sir. एक्चुअल Actual. इनिशियल वैल्यू जो भी है जो जहाज की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो थी सर. यानी कि 495.69 वो Yes, ले. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. और बाकी सारा डेटा जो होगा वो फाइनल कंडीशन का होगा. यस सर. सर एक छोटा सा डाउट था यहीं पे सर. हाँ जी, बोलो. जैसा कि सर हम ये केस 1 है सर, और जो हम लोग गोइंग टू हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी. हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी. ओके, सो ठीक है. इट शुड बी सर डाउन बाय हेड. ट्रिमिंग मोमेंट विल बी बाय हेड. हाँ सर, ट्रिम मूवमेंट बाय हेड. But the sign of the trim, the sign of the trim will determine the final Yes. sign of the final trim. तो मतलब सर इससे हम रिलेवेंट नहीं कर तो- सकते उस चीज को. So ना नहीं, तो अभी उसको मैं कोरिलेट कर देता हूँ. दी इससे TA मेरा आया यस सर. how much? सर टीए के से 0.0022 0022. 22. TF कितना आया? 0.0024. 0.0024. अब मैंने ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में डाला. So hydrostatic draft, forward, aft. Hydrostatic draft 9.334. 9.334. 334, 9.334. अच्छा, बिकॉज पॉजिटिव ट्रिम है तो सो आफ्ट में ऐड हो जाएगा सर. आफ्ट में ऐड होगा, फॉरवर्ड में सब्ट्रैक्ट होगा. सो 0.0024, 0.0022 ये किया. ये मेरे को देगा ड्राफ्ट फॉरवर्ड 9.332 एंड आफ्ट ड्राफ्ट देगा 336. 9.336.
6. Notice my initial trim was 0049. My initial Yes. trim was 0.049, sorry. So my initial trim has reduced in my final trim. That means the trimming moment is by head only. Yes, sir. Initially मेरे जहाज की ट्रिम 0.049 थी. फाइनली मेरे जहाज की ट्रिम कमती हो गई है. बट अभी भी स्टर्न है. Yes, sir. So trimming moment is by head only, as per the concept of mine. So we'll take the sign as the final trim जो हम निकालते हैं फॉर्मूले से, उससे साइन हम डिसाइड करेंगे सर. बिल्कुल ठीक. ये समझ में आया क्या किया हमने? Anybody has any doubt in this? Sir, वो last वाला part can you just repeat it, sir? This plus minus वाला ही. Okay. So the trim over here, which I've got using this formula, is positive. Yes, sir. That means finally I will have a stern trim. Yes, sir. So if I will have a stern trim, my TA will be plus finally, and my TF will be minus. Yes, sir. So I've done that. But my initial trim was 0.049. So initially my trim was more stern at Chennai. When I came to Haldia, my trim is still stern trim, but less. Yes, sir. The trimming moment is forward, but the trim is still stern trim. Absolutely right. तो एक्चुअली वी कैन आल्सो क्रॉस चेक नो सर. लाइक सपोज अभी जैसे हम लोग ने निकाला कि हम लोग का फाइनल ट्रिम इज लेस देन द इनिशियल ट्रिम, सो वी नो दैट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना सर. That's right. You can even check with it. So by checking on your LCB1 and LCG1 values, you can actually do a cross check whether you are on the right track or not. Yes, sir, correct. But there's a difference here. The difference is the extent of the trimming moment is something that is the debatable one. The extent of it. But essentially, this positive sign means this sign will determine the signs of your TF and TA. That you have to be careful. Yes. Is this okay with everyone? Any doubts in this part? All right. Third part. सर ये आपने एलसीबी का क्या बताया था कि कंपेयर करके कैसे पता लगेगा? ये मतलब फॉर्मूला में डाल देंगे तो 0 आ जाएगा. That's right. मतलब See, basically what I'm saying is अगर मैं ये LCB को देखता हूँ और ये LCG को देखता हूँ तो मुझे पता ही ये LCB इस LCG से बड़ा है. तो इसका मतलब है मेरा पॉजिटिव वैल्यू ये आएगा. अगर मेरा ये LCB सपोजिंग 175 से कम ही होता, सपोजिंग 170 होता, then I know my final trim would have been down by head. जी सर, ठीक है. That means I've gone if my final trim is down by head means my TF का sign has to be positive here. पॉजिटिव हो जाए. और TA का sign यहाँ पे नेगेटिव होना है. सर अगर दोनों इक्वल रहेगा सर, जस्ट वी कैन राइट वन सिंगल लाइन नो सर. LCB is equal to LCB, so one they even kill. बिल्कुल. You can just write one line and just straight it off. ठीक है.
ठीक है, can I erase it? The third part now. Okay, third part. अब थर्ड पार्ट पे चले. थर्ड पार्ट में we are going to 1.00. Okay. So third part में when we are going to 1.00, so what is your forward draft coming? 9.388. 9.388. Yes, sir. And after draft? 9.378. 378. तो सबसे पहले, is this okay with everyone? Yes, sir. Okay. So now we move in the same direction. W, this is the displacement. I move here. This will become my displacement, actual. But I want an equivalent displacement. So divided by 1.00 multiplied by 1.025, you will get an equivalent saltwater displacement of how much? 19983.082. Is everybody getting the same answer? Is everybody getting the same answer? So corresponding to that, the final hydrostatic draft is equal to how much? 9.38. 9.383. 9.383. 383. 9.383 आ गया corresponding. इसके corresponding मेरा LCB1 72.164. 72 The 72 है. 72.164. Okay. MCTC salt water 1 salt water 217.1535. 217.15. 0.156. Okay. 56, yes. ठीक है. MCTC1 for fresh water 211.860. 857. ठीक है. अच्छा, और क्या चाहिए मुझे? LCF1 69.494. 69.494. 494. And LCG1 will be equal to 72.175. ये तो सेम आ जाएगी क्योंकि मैं यहाँ चला गया हूँ विदाउट एच. तो ये खा रहे हैं. So therefore, अब मैं फाइनल कंडीशन की ट्रिम निकाल रहा हूँ. So please put yourself mics on mute. So I now go into trim 1. So I notice that LCB is less than LCG. So मेरी trim negative होने वाली है. Yes, sir. तो मेरी trim जो आएगी वो negative आएगी. ये कितनी आती है? -0.01. minus 0.0101 करके. 0101. Okay. So TA will be how much? 0.0049. 0049. Okay. TF 0051. 0.005197. Yes.
Okay, ये आ गया. So then I go into my tables again, forward draft, aft draft, and 9.383. And since this time I am down by head, so therefore my sign of TF will be plus, and my sign of TA will be minus. So I apply the figures, and I'll get my final answer 9.388 and 9.378. Any doubts in this? Any doubts? Is this okay with everyone? Anybody has any doubts? सर जो क्वेश्चन 4 में सर आपने कल बताया था कि सर डिस्प्लेसमेंट इन सॉल्ट वाटर से हम निकाल लेंगे डॉक वाटर ड्राफ्ट. क्वेश्चन Displacement. 4 का सर आपने बताया था इन सॉल्ट वाटर. सो उससे हम अगर हम टेबल में जाएंगे तो हमें मिलेगा डॉक वाटर ड्राफ्ट मिलेगा सर. बिल्कुल ठीक. तो सर ये जो डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर से सॉल्ट वाटर ड्राफ्ट कैसे सर वो थोड़ा सा डाउट में था भाई सर. बेसिकली ये मेरा ड्राफ्ट जो है, दिस इज माय ड्राफ्ट इन हल्दिया. यस सर. This is my draft in Haldia. This is my equivalent displacement in Chennai. Okay. This is my equivalent displacement in Chennai, corresponding to my Haldia draft. Supposing I now ask you, tell me my Chennai drafts. My Chennai drafts. My hydrostatic draft in Chennai. If I ask you, not my trim and all that, my forward and aft draft. I'm asking you, what is my hydrostatic draft in Chennai? इक्विवेलेंट निकाल के वहां से ड्राफ्ट देख सकते. So that will correspond to my displacement in Haldia. That condition. What is my displacement in Haldia? This is my displacement in Haldia. Agreed or not? This is my displacement in Haldia. इसके corresponding मेरा ड्राफ्ट क्या है? 9.183. ओके सर. सो ये मेरा चेन्नई ड्राफ्ट है, वो जो मैं स्टार्टिंग में मैं यही बोल रहा था. ओके सर, अंडरस्टूड. ठीक है ना? इज दैट ओके? यस यस सर, यस सर. सो दैट इज द बेसिक रिगमरोल. सो बेसिकली अगर कॉन्सेप्चुअली मैं क्लियर हूं कि चेन्नई में जो मेरा ड्राफ्ट है या चेन्नई में जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे को हल्दिया का ड्राफ्ट देगा, और हल्दिया की डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे को चेन्नई का ड्राफ्ट देगा. एंड इन दिस एंटायर फंडा द डिस्प्लेसमेंट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. वो मेरा अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है, खाली इक्विवेलेंट का खेल है. सर जो ऐसे सम्स आते हैं तो हाउ मच टाइम शुड वी टेक इन लाइक दिस सम्स? कितना मिनट लगना चाहिए सर? With the kind of practice that we are you're doing right now, abhi you would be, my guess is abhi right now you are taking roughly around 35 to 40 minutes. Is that correct? Am I correct on that? Yes sir, more than that. तीन क्वेश्चन थे तो सर. नहीं, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तीन थोड़ी आएंगे. ये तो नहीं सर, उससे कम में हो जाएगा. राइट. सो मैंने ऐसे ही मैंने रैंडम आपको बताया है कि अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, कोई भी रैंडम डेंसिटी रैंडम दिस थिंग जिस पे हम इवेंचुअली जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. अभी मैं स्टेप वाइज लेके जा रहा हूं, आपको उसी दिशा में ले जा रहा हूं.
Abhi, right now, if you're taking about 35 odd minutes to do one question, okay, if you time it properly, you know this thing, और आपको आंसर्स अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो आप ये वाला क्वेश्चन तो मैं लिंकेज के साथ करा रहा हूँ ना आपको, तो आपको इसकी तो पूरी लीनिएज पता है आपको इस क्वेश्चन की, तो बट अगर आपको लिंकेज ना पता हो, देन आप निकालोगे तो 35 मिनट आपके लग जाएंगे. 35 मिनट्स यू विल टेक टू डू द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Eventually, with practice, you will be able to achieve this in about 25 to 20 minutes. 20-25 minutes में हो जाएगा आपका. That's which is our aim right now. So you should be able to do it in 20-25 minutes without any much of a issue. ठीक है, is that okay? Yes, sir. All right. एक क्वेश्चन लो होमवर्क के लिए. MV Hinchif is floating at forward draft 9.388, aft 9.378 meters, in fresh water, density 1.000. तो उल्टा क्वेश्चन हो गया. यार अभी तुम लोग अब एनालाइज मत करो, अभी तुम लोग मेरे, तो 9.388 forward, 9.378 aft. Sir, please repeat the question, sir. Okay. MV Hinship is floating at a draft forward 9.388, aft 9.378 meters, in fresh water, density 1.000. Calculate her final drafts forward and aft. Number 1. When she moves into water of density 1.027, 1.027 meters. Number 2. So can you please repeat the last line? She calculate her final drafts when she moves into water of density 1.027. That is the first part. Second part. One point 002. So
we are now moving from 1.000 Haldia to Chennai of density 1027. Okay. And in the second one, Yes, sir. she is moving from 1000 to 1002. Okay. Is it okay with everyone? Is the question understood? Yes. Yes, sir. Okay. Do it very carefully. Using the same concepts. Concepts should remain the same. And you are doing, this will be as per, obviously, case number 2. Yes, sir. So quite obviously, you are going to be having a mean rise. Quite obviously, you will have a mean rise. So quite obviously, you would have a reduction in your draft. Yes, sir. ठीक है? Is that okay? Yes, sir. So कल डिस्कस करेंगे ये दोनों क्वेश्चंस को. And then you are good to go into the past papers and pick up any question of change of trim due to change of density. You should be able to do it. Okay, sir. And next week, say, we'll be starting off with tide. Okay, simple harmonic. And so I want you all, सबके ATTs आ गए हैं अभी कि अभी आना बाकी है? आ गए sir. Others, anybody who's not yet got a ATT? वो अभी ऑर्डर किया है सर, 2-3 दिन हो गए ऑर्डर किया तो 2-3 दिन हो गए. ठीक है, we'll wait. I'll wait for that. So we'll discuss it again on Monday. The moment Monday ko you all give a okay, then Tuesday ko we will start with the ATT. Sir, this volume 1, 2, and 3, right, of ATT? No, selected pages only. It's called as selected pages. We don't want the full. So I have selected pages from Admiralty Type Table, volume 1, 2, 3, 1992. Selected pages, correct? Yes, sir. I have this full. I got it from my friend. Okay, ठीक है. 1992. Yeah, ठीक है. That's okay. That's fine. सर ये जो ग्रेड कैलकुलेशन है सर वो कार्गो वाला सर वो यहीं पे रहेगा ना सर? हाँ, I'll be doing that. I'll be doing that. Okay. The grain calculations I'll be doing with you. ग्रेन लोडिंग जो है वो आपकी कैप्टन रायना सर कराएंगे. ग्रेन लोडिंग एंड ग्रेन प्रिकॉशंस एक्सेट्रा वो आपके कार्गो पेपर में आती है. एंड स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस ऑफ दैट आई विल बी डूइंग विद यू. बट द थ्योरी पार्ट ऑफ इट वो सब वहां पे होगा कवर उधर में. ओके. But that numerical can figure in both the places. It can figure over here in the stability paper and it can figure over there also. सर स्टेबिलिटी में सर इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेशन आएगी ना सर, बाकी जो कि लोडिंग डिस्चार्जिंग का आएगा वो वहीं पे आएगा ना सर? करेक्ट. बट कई बार स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस उधर भी आ जाती है. अच्छा, ओके सर. जो स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस हैं जो मैं इधर कराऊंगा वो दोनों जगह आ जाती हैं. ठीक है सर, आ जाएगी, अच्छा रहेगा. हाँ, अगर आ जाए तो. बट ये है कि फिर वो टाइम, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में 40-45 मिनट तो कहीं नहीं गए. So it's not a very welcome thing. But ठीक है, it's okay. We'll tackle it. ठीक है, all right. चलो, see you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.